Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Noreen Aleem, lecturer in zoology at Government Degree Girls College, PIB Colony. Under the supervision of my principal, Madam Rehana Meman, I am going to deliver a new lecture for the class first year pre-medical science, and the topic is life cycle of malarial parasite, that is called Plasmodium. What is Plasmodium? Plasmodium is a parasitic protozoa that causes malaria. प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक प्रोटोजो है. We know that parasites are those organisms that depends on their host, and they cannot live without their host, and they live inside the host for food, for shelter, etc., and causes the disease also. So, and protozoa is the phylum that include the unicellular living organisms, and it belongs to the kingdom Protoctista. So, Plasmodium infects red blood cells in mammals, including humans, birds and reptiles, that occurs worldwide, जो पूरी दुनिया में है, चाहे वो बर्ड्स हों, रेप्टाइल्स हों, इन सब में जो है प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, एंड स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन. ख़ास तौर पर दुनिया के ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं. Dear students, we should go now. Now we should know some vocabulary terms which will be used in further lecture. So the first one is the trophozoite. A trophozoite is the feeding stage of a protozoan parasites. In this form, when it mature, feed and become mature, so this form of the parasite is called the trophozoite. And the second term is the schizogony. Schizogony is the process of asexual reproduction during which the nucleus undergoes division preceding cell division. schizogony वो प्रोसेस है जिसमें कि शाइजोंट जो है वो तैयार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. इट मीन्स शाइजोंट माइटोटिकली डिवाइड. It means asexually reproduce, that no need the gametes, so mitotically divide into the preceding cells. So schizogony produces daughter cells known as the merozoites, and when the schizont undergoes schizogony and reproduce many daughter cells, now they are called merozoites, which can develop into gametocyte or enter new host cells and undergo another cycle of the schizogony. These are the forms of the plasmodium, like trophozoite feeding stage, merozoites after the division, and daughter cells, and schizont is also, this is the schizogony process, but schizont is a form which goes under the schizogony process. And over 150 plasmodium species have been identified that infect various species of the vertebrates. 150 प्लाज्मोडियम स्पीशीज से भी ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड की जा चुकी हैं जो कि वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करती हैं. बट हाउएवर ओनली 4 ऑफ दीज स्पीशीज़ कॉज मलेरिया. लेकिन सिर्फ 4 जो हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमंस में, जिनमें से फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल. In these 4 plasmodium species, the plasmodium falciparum causes the malignant tertian malaria, and it complete their life cycle more faster than the other plasmodium species. As we know that the
plasmodium cannot enter directly inside the host, so it needs a vector. So the vector of the plasmodium is female Anopheles. Female Anopheles mosquitoes serve as both the definitive host and biological vector of the malarial parasites. Only about 60 of more than 200 known species of Anopheles are considered to be vector of the malaria. And you can see the diagram of this, and it's is the female Anopheles. Life cycle of Plasmodium. Life cycle of Plasmodium can be divided into three stages. Number one is exoerythrocytic stage that occur in the liver of the man. And second one is the erythrocytic stage that occur in RBCs of men. And the third one is sporogonic stage that occur in the mosquito. And which mosquito? That is female Anopheles. Two stages occur in the man and one stage occur in the female Anopheles. Okay, dear students, let's understand the life cycle of the plasmodium through this image. And the life cycle of the plasmodium can be divided into two distinct cycles. That is the asexual cycle, that is also called the schizogony, and it occurs inside the human body. And the second one is the sexual cycle, that is also called the sporogony, and it occurs inside the mosquito, means female Anopheles. So let's start the cycle from the biting of the female Anopheles. Actually, when a female mosquito already infected with a parasite plasmodium, and if it is pregnant and need a big meal to feed their eggs, so it takes a big meal from the host, that is the human. And during the sucking, the saliva also enter inside the human blood, and with the saliva, the sporocytes that are already present in the saliva also enters in the human bloodstream. The one point which we want to remember, that the infection form of the plasmodium to the human body is the sporozoite. It means that the sporozoite form of the plasmodium enter inside the body, human body, and infect the humans. So as the sporozoites enter inside the human bloodstream, from there they travel approximately 30 to 40 minutes and finally reach to the liver, and they invade the hepatocytes, that are the liver cells. I told you in the beginning of the lecture that the plasmodium life cycle can be divided into three phases, that is the exoerythrocytic, erythrocytic, and the sporogonic. So exoerythrocytic, it means the liver stage. So inside the liver, as the sporozoites enter, the exoerythrocytic stage continue, and here the sporozoites develop and to become the schizont, and we know that schizogony is the process of the asexual reproduction, and in the asexual reproduction, mitotically division of the sporozoites, and they become a schizont, which consists of a lot of the daughter cells that are called the merozoites. And after the approximately 15 days of period, these liver cells burst and release 1,000 of the merozoites, and these merozoites enters in the bloodstream,
and these merozoites now called exoerythrocytic merozoites. So this is the end of the exoerythrocytic cycle, and these merozoites may invade the new liver cells, and most of that enter inside the uh, bloodstream now attack the RBCs, and as the RBCs become attacked, so erythrocytic phase starts. In the beginning of the erythrocytic phase, these merozoites attack the RBCs, and here they develop into immature trophozoid stage, that is called the ring stage, and this ring stage further develop to form the mature trophozoite, and this mature trophozoite to become a schizont, and again here the schizogony occur, that is the asexual reproduction, and schizont consists of a lot of the daughter new cells that called the merozoites, and approximately 72 hours of period these cells RBCs burst, and a thousand of the merozoites releases in the bloodstream, and these merozoites are now called these merozoites now called erythrocytic merozoites, and these merozoites attack the new fresh RBCs, and this cycle continue further. So some of the merozoites uh, due to the unknown factors may develop into two distinct uh, gametocytes, so that are called the microgametocytes and the macrogametocytes, and this is the end, the formation of the gametocytes is the end of the erythrocytic cycle. Now the second part of the life cycle of Plasmodium is the sporogony cycle, and I told you that the sporogony cycle occurs inside the female anopheles. Now when the gametocytes form inside the human blood, so they need the new host, that is the female anopheles, to further development. So as the female anopheles, it is not necessary that it is already infected or not, but as the female anopheles suck the blood from the human, so these gametocytes along with the blood enter inside the body. Inside the gut of the female anopheles, these gametocytes further developed and become the gametes. The female macrogametocytes form a macrogamete, and the male microgametocytes develop and produce 4 to 8 microgametes, and only one microgamete fuse to the macrogamete and form the zygote. It means that here the fertilization occur, as we know that the fertilization is the union of the male and the female gametes. So here the fertilization occurred, that is why this cycle is called the sporogony cycle, an asexual cycle. Further the zygote develop into the eukaryotes. Eukaryote is a worm-like, and it is a motile and move toward the wall of the midgut, and here it embedded inside the wall and become a oocyst. Here the oocyst develop, grow further, and finally rupture and release a lot of these sporozoites, and these sporozoites move further toward the salivary gland of the female anopheles. And now if this female anopheles take a big meal from the host, then again the cycle start. So dear student, this is the life cycle of the plasmodium. आइए इसका एक जो है वो छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि शॉर्टली जो है इसका जायज़ा ले लेते हैं कि किस तरीके से ये साइकिल होता है। जब एक फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है, सक करती है ब्लड, तो वो उसकी सलाइवा में
जो है बहुत सारे स्पोरोजोइट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि जैसे ही वो सक करती है तो साथ में सलाइवा भी एंटर कर देती है ब्लड स्ट्रीम में। और ये स्पोरोजोइट्स जो हैं ये फिर फर्दर जो है ट्रैवल करते हुए ब्लड के ज़रिए लीवर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लीवर के सेल्स को अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद हमने देखा कि ये जो है डिवाइड होते हैं, मैच्योर होते हैं, डिवाइड होते हैं और शायज़ोन बनाते हैं। और एसेक्सुअली डिवीजन के बाद जो इसमें बहुत सारे मीरोजोइड्स बन जाते हैं, जो कि तकरीबन जो है वो 15 दिन के बाद जो है ये रप्चर होते हैं सेल्स, और बहुत सारे मीरोजोइड्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। यही मीरोजोइड्स जो हैं वो कुछ जो हैं वो दोबारा से जो फ्रेश लीवर सेल्स हैं उनको भी अटैक करते हैं। ये साइकिल जो है जारी रखते हैं। ये वाला फेज़ जो हमने देखा था कि ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक या प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़ कहलाता है। अच्छा, जैसे ही मीरोजोइट्स जो हैं ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर आके वो ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें अटैक करते हैं और यहाँ से इरिथ्रोसाइटिक स्टेज शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वो एक रिंग स्टेज बनाते हैं, में डेवलप होते हैं, जो कि इमेच्योर ट्रोफोजोइड स्टेज है, एंड देन इमेच्योर ट्रोफोजोइड स्टेज, और फिर शाइज़ोइड। यहाँ पर फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और बहुत सारे मीरोजोइड्स जो हैं तकरीबन 72 आवर्स के पीरियड के बाद जो है वो मीरोजोइड्स जो हैं बहुत सारे निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं रप्चर हो जाने के बाद सेल्स के। और फिर यही मीरोजोइड्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं साइकिल, और जो फ्रेश आरबीसीज हैं उन्हें इन्फेक्ट करते हैं। कुछ मीरोजोइड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मॉडिफाइड होते हैं टू डिफरेंट सेल्स में, यानी कि गैमेटोसाइट्स में। एक हो जाएगा मैक्रो में मैक्रोगैमेटोसाइट, एंड सेकंड इज दी माइक्रोगैमेटोसाइट। यहाँ पर आकर जो है एंड हो जाता है इरिथ्रोसाइटिक फेज़ का। और ये पूरा जो ह्यूमन बॉडी में हमने देखा कि एक साइकिल था, 2 फेजेस कंप्लीट हुए, और ये एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये अब वेट करते हैं कि कब जो है ये फीमेल एनोफिलीज के अंदर एंटर हो। और जब कोई फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है, सक करती है ब्लड, तो ब्लड के साथ ये उसकी बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ अगर गैमेटोसाइट्स जो हैं वो डेवलप होंगे गैमेट्स में, फिर फ्यूजन अगर होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर एक जायगोट बन जाता है। जायगोट जो है वो फर्दर डेवलप होता है और फिर ओकाइनेट्स बनाता है। ओकाइनेट्स जो है वो एम्बेडेड हो जाता है दीवार के साथ, जो कि मिडगट की वॉल है, वहाँ पर आके वो oocyst बनाता है। oocysts फर्दर डेवलप्ड होती है और फिर वो डिवाइड होती है, और बहुत सारे जो हैं स्पोरोजोइट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर रिलीज़ होते हैं, और वो ट्रैवल करते हुए सिलेवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं। और फिर यही जो फीमेल एनोफिलीज है जब बाइट करती है तो वो एक न्यू होस्ट को इन्फेक्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। Now students, we will discuss about the symptoms that appears after the infection of the plasmodium. The initial symptoms of malaria infection are non-specific and can include headache, nausea, vomiting, photophobia and muscle aches. शुरुआत में जो सिम्टम्स मलेरिया के इन्फेक्शन से वाज़ा होंगे वो नॉन स्पेसिफिक है, एंड कैन इंक्लूड हेडेक, जो कि नॉर्मली हो सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो वो सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। हेडेक, नोज़िया मीन्स दैट द फीलिंग ऑफ द वॉमिटिंग हो सकती है। फोटोफोबिया मीन्स आँखों को जो है वो लाइट का बुरा लगना, तेज़ रोशनी का चुभना आँखों में, एंड मसल्स एक, और मसल्स में पेन भी हो सकता है। दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स। Number 2, a malarial paroxysm is marked by onset of a sudden shaking chill, which may last from 10 to 15 minutes or perhaps longer. मलेरिया पैरोक्सिम्स वो कंडीशन जिसमें कि एक अचानक से शेकिंग, चिलिंग जो है वो पेशेंट को फील हो, और जो कि 10 to 15 मिनट्स तक रहे और फिर जो है वो सही हो जाए। उसके बाद अगेन जो है वो दोबारा से एकदम से शेकिंग, शिवरिंग और चिल वो महसूस करे, तो दिस इज़ कॉल्ड द पैरोक्सिम्स। और ये बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो
पेरियोक्सिम्स और इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स वाज़ा होते हैं वो तब वाज़ा होते हैं जब प्लाज्मोडियम अपने इरिथ्रोसाइटिक फेज में होता है, जब अ लॉट ऑफ दी आरबीसीज रप्चर एंड डैमेज, सो अनीमिक कंडीशन भी हो जाती है। और इसके अलावा तब बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो वाज़ा होना शुरू हो जाते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर accompanies the paroxysms and may be sustained for typically 10 hours or more. This cycle repeats itself every 36 to 72 hours depending on which species the human host has been infected with. टेम्परेचर का बढ़ जाना, फिर ठीक हो जाना, साथ में शिवरिंग भी है, शेकिंग भी है, स्वेटिंग भी है, ये तकरीबन 10 आवर्स तक जो है वो सस्टेन रहना और फिर ये साइकिल जो है फिर से हो जाना रिपीट होता है एवरी 36 टू 72 आवर्स। और ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पर कि कौन सी स्पीशीज़ जो है मलेरिया की उसने इन्फेक्ट किया है ह्यूमन को। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया कैन अराइज लीडिंग टू मोर सीवियर पैथोलॉजीज। कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाएं तो वो सीवियर पैथोलॉजीज की तरफ लीड कर जाती हैं। सच पैथोलॉजीज इंक्लूड ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली लाइक स्प्लीन एंड may become enlarged, renal diseases भी हो सकती हैं। Falciparum infection may lead to decreased blood flow, tissue hypoxia, anemia, and cerebral malaria, in which severe headache precedes drowsiness, confusion, and coma. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेल्सिपेरम जो है 4 स्पीशीज़ में से जो एक मैलिग्नेंट टर्चरी इन्फेक्शन जो कॉज करती है मलेरिया का, फेल्सिपेरम स्पीशीज़ है वो जो कि इन्फेक्ट करती है। फेल्सिपेरम इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स शामिल हैं वो है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो का कम हो जाना, टिश्यू हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए टिश्यूज़ में, अनीमिया ब्लड की कमी है, एंड सेरिब्रल मलेरिया यानी कि ब्रेन तक जो है वो असरअंदाज हो सकता है। इन विच सीवियर हेडेक जो है वो होगा, प्रीसीड्स ड्रॉजीनेस कंडीशन हो जाएगी, कन्फ्यूजन एंड द कोमा। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट अपीयर इन द इन्फेक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मलेरिया जो है वो एक इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड पर्सन में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। सो आइए इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। जैसा कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करती है तो वो पैरासाइट्स एंटर कर देती है जो कि इन्फेक्शन का कोज है। बेसिकली ये पैरासाइट्स एंटर हो जाते हैं वेक्टर के ज़रिए एक ह्यूमन में जो कि इसको इन्फेक्टेड बना देते हैं। अब ये पर्सन अगर एक्सपोज्ड है और इसको फर्दर आगे जाके किसी एनोफिलीज़ ने बाइट कर लिया है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी कि उसके अंदर भी वही गैमेट्स जो है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर बाकी का साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब ये इन्फेक्टेड जो हो गई है फीमेल एनोफिलीज़, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो फिर जो है वो अनइन्फेक्टेड भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से बआसानी इस वेक्टर की वजह से जो है वो मलेरिया की डिज़ीज़ जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आइए अब हम आगे मज़ीद ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और हमें इस डायग्राम से ही वाज़ा हो रहा है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट अस फ्रॉम दी मलेरिया। यस, वी कैन prevent us from the malaria by avoiding the biting of the female anopheles। आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और इन मॉस्किटो से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स कम्प्लीटली। ये तो मुमकिन नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो मॉस्किटो के बाइट से अपने आप को बचा सकें, बट द लेस यू आर बिटन द लेस लाइकली यू आर
टू गेट मलेरिया, बट हमारी कोशिश होनी चाहिए या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत हद तक मलेरिया से बचने के लिए जो है इन मॉस्किटो के बाइट से ख़ुद को बचा सकें। टू अवॉइड बीइंग बाइटेन, यानी कि अगर हम मच्छर के काटने से बचना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को अपनाना है। मॉस्किटो से बचने के लिए हमें जो है वो ऐसे जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वो उसका हम ध्यान रखें कि उसकी कंडीशन कैसी है। स्क्रीनिंग ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाजे और खिड़कियों पर स्क्रीनिंग है या नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी ध्यान रखें कि डोर्स और विंडोज़ जो है वो ठीक तरीके से बंद हो। एयर कंडीशन रूम में नहीं सो रहे हैं तो आप जो है स्लीप अंडर एन इंटैक्ट मॉस्किटो नेट, तो आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं दैट हैज़ बीन ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा यूज़ इंसेक्ट रेपेलेंट ऑन योर स्किन पर भी आप यूज़ कर सकते हैं इन स्लीपिंग एनवायरनमेंट में, बट रिमेंबर टू रीअप्लाई इट फ्रिक्वेंटली। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो इसे बार बार आपने जो है वो जल्द ही दोबारा से उसका यूज़ करना होता है। The most effective repellents contain DEET and are available in sprays, roll-ons, sticks and creams. इसके अलावा हमें पहनना कैसे कपड़े चाहिए। वेयर लाइट लूज फिटिंग ट्राउज़र्स रादर देन शॉर्ट्स। हमें शॉर्ट्स वगैरह की जगह हल्के कपड़े जो कि लूज फिटिंग के ट्राउज़र्स हों उनको तरजीह देना चाहिए। एंड वेयर शर्ट्स, वी शुड वेयर शर्ट्स विद लॉन्ग स्लीव्स, और लॉन्ग स्लीव्स के साथ की शर्ट्स पहननी चाहिए। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अर्ली इवनिंग एंड एट नाइट व्हेन मॉस्किटोज प्रीफर टू फीड। जब मॉस्किटो का टाइम होता है फीड करने का ख़ास तौर पर, उस वक्त हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि ड्यूरिंग अर्ली इवनिंग यानी कि जब शाम शुरू होती है, एट नाइट और रात के टाइम। Okay dear students, I hope you will like this video. Inshallah I will come again with new lecture for you. Till then, Allah Hafiz.